वास्कोच्या साईनगर वाठारांत सिलिंडर गॅस लीक जाल्ल्यान एका मनशाक मरण आयले। 2 दीस आदींच भाड्यान रावपाक आयिल्ल्या 4 कामगारांच्या घरांत सिलिंडर लीक जावन न्हिदिल्ले कडेन एकलो मेलो। थळाव्यांनी दार फोडून तांकां भायर काडले। उरिल्ल्यांक हॉस्पिटलांत दाखल केला। पुलिसांचो तपास चालू आसा। पळयात हिरू महालीचो रिपोर्ट। नगर हांगा ह्या भागान आनी साईनगर वास्को आनी फाटल्यान जे दिसता थिंगा जायते लोक रेंटेड रावता आनी ह्या रेंटेड प्रिमायसिसान 4 लेबर जे आसले हे खंय तरी यूपीसून येयल्ले काल पयरूच येयल्ले रेंटा खातीर आनी येयल्या उपरांत हे रुमान रावताले आनी तेंच्या कडेन सिलिंडर आसलो। ह्या सिलिंडराची गॅस लिकेज जाली अशें म्हणून कळून येयल्लें आसा आनी तेच्या उपरांत हे 4 लेबर राती जे न्हिदले ते सकाळ फुडें अनकॉन्शियस पावतून थिंगा आसले आनी जेन्ना सकाळीं तांकां कोणी उठोवपाक गेलो तेन्ना तो दार उगडना म्हणून दार फोडून तांकां भायर काडले। जाल्यार भितरलो एक मरण पावल्लो आसलो आनी बाकीचे 3 जे आहात हे अनकॉन्शियस आहात तांकां सद्या चिखली व्हेल्या। चिखलीसून आतां तांकां बांबोळ शिफ्ट करतात। ॲक्च्युली सकाळी 8:30 सुमार 4 लोक आयिल्ले 108 ॲम्ब्युलन्सान घेवन आयिल्लो। तातूंत एकटो एक्सपायर्ड आशिल्लो। आमकां हिस्ट्री अशी मेळ्ळ्या की ते पेशंट गॅस लीक तांच्या रुमान गॅस लीक जालो आनी उठतना तांकां खरस मारपाक लागली आनी एकट्याच्या तोंडांतल्यान रगत येवपाक लागलें आणि 4th पर्सन वॉज नॉट मुव्हिंग ओनली, सो ही वॉज ब्रॉट डेड। सगळ्यांक चेक करून आम्ही जीएमसी धाडला तिगांक। एकटो डेड ब्रॉट डेड इज हियर ओनली। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। थे गांव से आए थे, 8 लड़के आए थे और दोनों 2 रूम में रहते थे, एक में 4 एक में 4 करके। उसके बाद वो रात को सोए थे 4 लड़के, तो गैस वैस चालू करके दरवाज़ा बंद करके सो गए। फिर रात में उनको गैस लगता चढ़ गया, कुछ भी ऐसा कुछ, फिर गए। अभी रात में सुबह ये बगल वाले 4 लड़के दरवाज़ा पीट के थक गए, खोले नहीं। तब दरवाज़ा तोड़ के देखे तो सारे बेहोश पड़े, गांठ मुँह से निकला है पूरा। ऐसा करके फिर ये लोग एम्बुलेंस का फ़ोन किया तो इधर हॉस्पिटल में लेके आए। गॅस लिकेज काय कळूंक ना, ओके। आणि अख्खे रूम बंद आशिल्ले तेंचे आणि फुल पॅक असले कारणान ताका कितें जालें, गॅस लिकेज कारण तेन्ना एक एक्सपर्ट जाला म्हणून ऐकलं आम्ही आणि 3 जण इंजर्ड आसा अजून। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।